Hello and welcome to all of you. Welcome to my channel Blue Chip Finance. Hit the subscribe button and press the bell icon if you think that these videos are beneficial for you. In this video we will discuss about the question of final accounts part 2, BCOM part 2, paper 2013 related to Punjab University. And now let's move to the question. इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले एक बात कि ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस क्वेश्चन। इसको बड़ा ध्यान से और गौर से इसको सुने और देखें। और ये एक काफ़ी हद तक एक कंप्लीट टाइप का क्वेश्चन है। इसके अंदर आपको बड़ी एडजस्टमेंट्स मिलेंगी और अगर आप इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं तो बाकी क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए बड़ा इजी हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं जी कि फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ अख्तर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रीपेड ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिलेटिंग टू 2010 एंड द बैलेंस शीट एज एट 31 दिसंबर 2010। स्टार्ट करते हैं जी स्टॉक से। क्लोज ओपनिंग स्टॉक है ये, तो ये ट्रेडिंग की किस साइड पे जाएगा जी? डेबिट साइड के ऊपर 75,000। परचेजेस अगर इसके ऊपर कोई कैरेज है तो ऐड हो जाएगा, नहीं है तो छोड़ देंगे हम। अगर कोई रिटर्न्स हैं तो वो इसमें से लेस हो जाएंगी। परचेजेस रिटर्न्स इसके अंदर चलें आगे देखते हैं, अगर आती हैं तो उस वक्त देख लेंगे इसको। परचेजेस ट्रेडिंग की डेबिट साइड के ऊपर जाएगा। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, प्लांट एंड मशीनरी, ये दोनों आपके लिए फिक्स्ड एसेट्स हैं। अगर कोई डेप्रिसिएशन है तो एक्सपेंस में ट्रीट होगी और एसेट में डेप्रिसिएशन की वैल्यू लेस करके हम लिखेंगे। कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, दीज बोथ आर योर करंट एसेट। बैलेंस शीट में करंट एसेट के हेड के अंदर जाएगा। फ्यूल एंड पावर योर डायरेक्ट एक्सपेंस 2250, ये आपके लिए डायरेक्ट एक्सपेंस है, फ्यूल एंड पावर। सो ट्रेडिंग के अंदर अगर आप देखें तो ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, ये आ गया फ्यूल एंड पावर 2250। और अगर इसके अंदर आप देखें नीचे वेजेस एंड सैलरी, तो ये जहन में रखें कि अगर ओनली इफ वेजेस आर गिवन देन डायरेक्ट एक्सपेंस, इफ सैलरीज देन इनडायरेक्ट, बट इफ दीज आर रिटन बोथ but first wages is given, then it will be treated as direct expense, and if salaries and wages, then it will be treated as indirect expense. So it is wages and salary, so we treat here as a direct expense, so 39,000. But here one adjustment is given, wages and salaries include rupees 2,000 paid as wages for installation of machinery. सो ये यहाँ से हम इसको एक्सक्लूड कर देंगे, बीच में से निकाल देंगे। तो वेजेस एंड सैलरीज 39,000 लेस इंस्टॉलेशन चार्जेस 2,000 एंड रिमेनिंग वैल्यू इज 37,000। आफ्टर दैट फ्यूल एंड पावर वी ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दैट। उसके बाद अगली चीज आ जाती है जी इंश्योरेंस इज योर इनडायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्टर फी is your indirect expense, custom duty and clearing charges is your direct expense 5250. So these will be directly added to your manufacturing charges in direct trading account. So custom duty and clearing charges 5250. And now where are sales? Okay, so repairs are your indirect expense, will be placed on the debit side of the profit and loss account. Sundry debtors are your assets 58500. Sales is your indirect revenue, so sales will be placed in the trading account 3,60,000. And finally closing stock, which is normally given in the adjustments. We are locating closing, yes, it is given here 1,10,000, 110,000. So it will be placed one time in trading account credit side, and one time it is appeared in the asset side of the balance sheet under the head of current assets. So after summing, total sum is 470,000, and less all these
direct expenditures, and now your direct gross profit is 185500. It will be placed on the credit side of the profit and loss account 185500, and now we are going to subtract all the indirect expenditures. So here you are seeing here that stock already treated, purchases treated, freehold property asset, plant and machinery asset, cash at bank asset, cash in hand asset, fuel and power direct expense already treated, wages and salary direct expense already treated, insurance, director fee, these both are your indirect expenditures. So insurance and director's fees both are your indirect expenditures. After that, custom duty and clearing charges already treated into trading. Repairs is your indirect expenditure, so 3600 will be placed on the debit side of the profit and loss account. So here repairs 3600 will be placed here. Now after that, sundry debtors are your asset. Sales already treated into trading account credit side. Profit and loss account credit will be placed on the profit and loss appropriation account credit side. Reserve for bad debt. So finally it is better that first we treat the bad debt. So what is the formula? Once again, just like each time, I'm going to repeat once time more. That formula is bad debts is that bad debts add write off, add new provision, less old provision. So bad debts are 1500, and write off, either write off given, there is no write off related to bad debts, so there is no write off. And what is new provision? Yes, it is given here. Create a reserve for doubtful debts at 5% on debtors. So 5% on sundry debtors. So where are sundry debtors? Sundry debtors are given here, 58500. So now we are going to treat the bad debts. So bad debts 1500, write off not given 0, new provision 5800, 500 multiplied by 0.05, 2925, less old provision. Old provision is given in the trial balance here 1800. So less 1800, remaining balance is 2625. And when we treat sundry debtors, we just subtract two things. One write off, which is 0, and another one is new provision 2925. So in balance sheet, asset side, sundry debtors 58500, less write off 0, less new provision 2925, and remaining sundry debtors are 55575. So now what next in the question? 6% debentures are your long term liabilities, 300,000. So it will be placed on the liability side of the balance sheet. 6% debentures, 300,000. After that, investment in shares, these are investment for you. So investment is your asset, so it will be placed on the asset side of the balance sheet. Preliminary expenses 6,000, it is a deferred cost, but here one adjustment is given related to preliminary expenses. Write off preliminary expenses, which means कि हम preliminary expenses asset side के ऊपर deferred cost में हम zero कर देंगे, और इन preliminary expenses जो कि यहाँ पे given है 6,000, इनको हम indirect expenditure का हिस्सा बना लेंगे. तो deferred cost के अंदर preliminary expenses zero हो जाएंगे asset side में, balance sheet में, और ये preliminary expenses हम profit and loss के अंदर इनको ट्रीट कर देंगे, और ये preliminary expenses जो हैं ये आ गए. Write off preliminary expenses 6,000 rupees. After that, अगर आप आगे चलें तो फर्नीचर एसेट है आपका, फिक्स्ड एसेट के अंदर आएगा. शेयर प्रीमियम आपका बैलेंस शीट में लायबिलिटीज के अंदर, रिजर्व के अंदर ये आएगा 7500. सन्ड्री क्रेडिटर्स योर लायबिलिटी,
ये लाइबिलिटी के अंदर करंट लाइबिलिटीज में आएगा। डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व भी बिल्कुल शेयर प्रीमियम की तरह ये रिजर्व में आएगा 6750। डिस्काउंट रिसीव 2400 ये आपके लिए रेवेन्यू है, और शेयर प्रीमियम, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व और डिस्काउंट रिसीव्ड आपको मैं दिखाता हूँ। डिस्काउंट रिसीव्ड जो है ये आपका आ जाएगा, ये इधर 2400 ये आपका रेवेन्यू है, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर आ जाएगा। और उसके बाद अगर आप देखना चाहते हैं कि शेयर प्रीमियम, तो शेयर प्रीमियम ये आ गया 7500। और डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व जो है, यानी डिबेंचर्स को रिडीम करने के लिए, उनको ख़त्म करने के लिए अगर कोई रिजर्व रखा गया है तो वो भी लाइबिलिटी के अंदर, रिजर्व्स के अंदर ये प्लेस होगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं। इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड के ऊपर आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर डेबिट साइड के ऊपर चार चीज़ों को माइंड में रखें। एक इंटरिम डिविडेंड, एक प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, एक आपका आ जाएगा प्रोपोज डिविडेंड, और ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। अगर आप देखें कि इधर एडजस्टमेंट्स के अंदर ये लिखा हुआ है ट्रांसफर ₹18,000 टू जनरल रिजर्व, और ये अगर एडजस्टमेंट्स में गिवन है तो आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में इसको मेंशन करेंगे। और चार चीजें ये माइंड में रखें। प्रोपोज डिविडेंड, प्रोपोज्ड फाइनल डिविडेंड 10% ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है जी आपका? इक्विटी शेयर कैपिटल है 225,000। सो टेक 10% ऑफ 225,000 एंड आपका जो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है 37500 and one interim dividend which is given here. Interim dividend is 13500 and these four will be placed on the debit side of the profit and loss appropriation account. अब इसमें से क्या चीजें बैलेंस शीट के अंदर जाएंगी? बैलेंस शीट के अंदर एक प्रोविजन फॉर टैक्सेशन आपका करंट लाइबिलिटीज में चला जाएगा, एक प्रोपोज डिविडेंड आपका 22500 करंट लाइबिलिटीज के अंदर प्लेस होगा, और ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व ये रिजर्व हेड के अंदर ये एड अप हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें कि प्रोपोज डिविडेंड 22500, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 37500, और इसके अलावा अगर रिजर्व के अंदर आप देखें तो जनरल रिजर्व 15,000 है, और उसके अंदर जो आपने ट्रांसफर किया अमाउंट 18,000, अब आपका जनरल रिजर्व 33,000 जो है ये हो जाएगा, क्योंकि जनरल रिजर्व जो है ये 15,000 यहाँ पे भी गिवन है, और 18,000 जो है वो आप जनरल रिजर्व के अंदर आप ट्रांसफर करने जा रहे हैं। तो ये इसकी ट्रीटमेंट्स हैं। उसके बाद अगर आप देखें इंटरिम डिविडेंड, डिबेंचर इंटरेस्ट पेड 9,000, तो यहाँ पे एक बात का ख्याल रखें कि ये डिबेंचर्स का आप परसेंटेज देख लें कि क्या है। 6% डिबेंचर्स हैं, 3 लाख और 300,000, 6% टोटल 18,000। 18,000 out of 18,000, 9,000 is already paid and 9,000 is payable. So when we write down debenture interest paid 9,000, we just add up extra 9,000 into debenture interest that is outstanding, which we will have to pay. So 18,000, and when we make our balance sheet, this 9,000 will be placed in the liability side of the balance sheet. Interest on debenture payable 9,000 rupees. After that, what next? Dividend on investment, which you are going to receive, or you received, and that is revenue for you. It will be placed on the credit side of the profit and loss account. So dividend on investment 1,000 ये आप रिसीव कर रहे हैं, आपने इन्वेस्टमेंट की है और उसके ऊपर आप रिसीव कर रहे हैं। और टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, ये हम बात करते हैं इसके ऊपर। बैड डेट्स हम ऑलरेडी ट्रीट कर चुके हैं, और कैरेज आउटवर्ड जो है ये 880 आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस आप कहाँ पे लिखते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड के ऊपर। तो कैरेज आउटवर्ड अगर आप ये देखें तो 880 जो है ये यहाँ पे ये प्लेस होगा। तो अब अगर आप देखें तो आपने प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पे इंश्योरेंस, डायरेक्टर फी, रिपेयर्स, बैड डेट्स, एड राइट ऑफ, एड न्यू प्रोविजन, लेस ओल्ड प्रोविजन,
कैरेज आउटवर्ड, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। और यहाँ पे एक बात माइंड में रखें कि आपने एडजस्टमेंट में देखा होगा कि यहाँ पे उसने कहा है कि wages and salaries include rupees 2000 paid as wages for installation of machinery. The cost which you pay on the installation of machinery is the part of the cost of the machinery. So machinery is plant and machinery 256500 and add this 2000, so 25600 plus 2000 and take 10% depreciation and depreciation in 25850। और जब हम फिक्स्ड एसेट में इसकी वैल्यू को पुट करेंगे 256,500 plus 2000, then we just subtract this depreciated value out of the plant and machinery value. Plant and machinery, as you are seeing here, that 256,500 plus 2000, 258,500 minus depreciation, and remaining book value now is this 232650. And there is another depreciation for furniture, and that depreciation is 5%. So what is the value of furniture? Furniture value is 30,000 and 5% of 30,000 is 1500 rupees, and depreciation on furniture is 1500, and when we place this value of furniture in the balance sheet, we just subtract this depreciated value. So now your furniture book value is 28500. So this 28500 is your new book value of the furniture. And now one thing which is left, and that is tax deducted at source. Tax deducted at source, which is given here 120, is your current asset. So it will be placed on the current asset side or asset side of the balance sheet, and that is given here. Tax deducted at source 120. So now one thing, profit and loss appropriation account. Current year profit is 118295, which will be placed here, and previous year profit will be given in the trial balance, that is given here 26250. So these two profits will be placed on the credit side of the profit and loss appropriation account. The sum is 144,545, and just subtract these four values: transfer to general reserve, provision for taxation, proposed dividend, and interim dividend. Interim dividend is only placed here. Other than this place, it will not be placed at any other place. So these four things will be subtracted out of 144,545, and remaining your balance is 53045, which will be added to the reserve. So profit and loss appropriation is 53045. General reserve, as we already discussed, is now 33,000. So now balance sheet is balance. Liability side is 7404045, and asset side is also 704045, and that is the end of the question. It is a little bit tricky question, so just make practice of this question. It is, in my opinion, it is somehow a complete form of the question, and soon I will come with another question of the final account part 2. So stay safe, stay blessed, and take care of yourself and the persons around you. Thank you.